Assalamu alaikum everyone, I'm Aksa Tariq, the editor-in-chief for the CXO Media Brands in Pakistan, and on behalf of my editorial and conferences team, I'd like to welcome you all to another CMA session. Today we have with us Mr. Muhammad Kashif Siddiqui, and as I was just telling him offline that the last time we had him, he was taking care of another role at another organization. But given that his experience is vast in the financial services industry, we'd like to introduce him as now the manager IT governance, if I'm correct, at Khushhali Microfinance Bank. He's also relocated to Islamabad, so I think it's an interesting opportunity for us to learn more about his work and what it looks like today, because microfinance industry as a whole has also seen a lot of growth in the last few years in the way that banking or the way that microfinance functions. I'd like to introduce you, Kashif Saab, and thank you for your time and thank you for the time today and joining us. So we can start with a brief introduction, please. Yeah, working as a manager IT governance at Khushhali. My full name is Muhammad Kashif Siddiqui, and I'm also CISA PMP, CGIT in COVID. Besides, I work for JS, Bank Labib, UBL, National Bank, and other national multinational companies. And apart from my certifications and qualifications, I'm also visiting faculty in different universities in Karachi as well. So that's it. So my first question to you would be, of course, you've also been part of like faculty on the faculty side of things, right? How have you seen, or what have you seen as like great milestones for the industry? Because you've been a part of the governance or security teams previously at another bank and now also at Khushhali Microfinance Bank. If I were to ask you, if you look at both perspectives, what have been milestones in your career journey? Yeah, especially in terms of the overall, as we speak, as far as computer science is concerned, I moved from development, QA, and then audit, security, and now in governance, and a little bit project management as well. But as far as governance is concerned, within governance, we had and we have now so many things in parallel, like resource optimization, risk management, and of course IT governance, SOPs, and little bit project management as well, regulation, regulatory compliance, PCI DSS compliance, information security compliance, and so many other verticals coming under the umbrella of IT governance. And what I'd also like you to sort of talk about is the digital transformation journey. I know that DX is a term or trend that has been going around for many years, but of course COVID has really brought that shift about. You talked about a lot of project management, and I think a significant part of your own work goes into that. How do you think this has evolved, and of course the role of technology here in shaping those organizations? Yeah, a very hot topic nowadays as far as banking industry, especially financial industry is concerned. I was just seeing somewhere that ICRA University just launched a FinTech MSc or BSc in FinTech, by the way. So that means inclusion of financial and technology as well, right? Being techie, ex-techie and now governance guy, as the progress is, on the go as far as digital is concerned, and as a result of that, InfoSec related things like issues, and of course IT governance related things like regulatory compliance are moving up and coming up very fastly. That's why we had so many tools in place. Currently we are in a process to implement, acquire, purchase so many other tools as far as governance, project management, InfoSec are concerned. So digital means everything is on digits. That means people are coming in while opening their account through mobile app, through internet, and through other medium as well, through other channels, I would say. So as the channel goes up, that means there are other vulnerabilities and threats which are also coming up. That means our duty, our responsibilities are also increasing day by day. That's a big challenge. So if I were to ask you on IT governance best practices, I know that it understands, overseeing the delivery of specific projects, deal with, change management. And I think a lot of your role goes into that, and also ensuring that the processes are executed correctly
there are certain, of course, IT governance best practices. What are some of the best practices that you use in your current role or even previous? The best is what we need to follow. We have to follow is corporate and CGIT, right? In there are 5 major verticals. Governance framework number 1, risk optimization number 2, benefit realization, resource optimization, and of course communication, transparency, right? In a very simple words, governance means a balance of compliance and performance. Compliance, you would say conformance as well, right? So as far as those 5 verticals are concerned, we are good to go as far as regulatory compliance, especially first of all, because SVP is over us all the time. And then of course, risk management, technology risk, infosec, as I just mentioned earlier, business risk, operational risk, and so many other areas in which we are facing risk management issues. So these 5 are major verticals as far as governance is concerned. And then SOPs are coming in, and then tools are coming in, because just to have SOPs documented, that doesn't mean that it has been implemented. As far as the implementation of SOP is concerned, we need to have automation in terms of certain tools. That goes if that goes live, it means things are automated and people are following those practices which are written in the SOP. So that is what the end-to-end cycle of a governance. And the thing which is also being followed as far as process implementation or process engineering is concerned is CMMI. That stands for capability, maturity, model integration, which has 5 stages from ad hoc to matured, automation, and so many things, which I just mentioned earlier. Another thing that you mentioned, which I would like you to elaborate on, is of course prioritizing effective risk management also, right? The IT governance team mitigate these risks by designing compliance, evolving processes to make compliance an integral part. And I think that is something that that also is part of your role. What kind of experiments have worked well for your company and what hasn't? Yeah, interesting question. So many things. In Bengal Labib, I put myself in the shoes of implementing COVID CMMI, which was my first ever experience or first ever project as far as IT governance is concerned. Then moved to JS Bank. Over there, I established a team of IT governance, having information security, SOP, documentation, policy procedure documentation, and then ETGRMF. ETGRMF is basically a Bible of IT governance, published by State Bank. The latest version, it came in May 2017. So we need to follow as a banking industry or as a financial industry as well. So now in Khushhali, I started just in June 2022, and now we are in the process of of designing different SOPs, formulation of different policies based on ETGRMF of SBP. That's our regulator, by the way. And also, as I said earlier, automation of those SOP, we need to have certain automated tools and different software. So we are also thinking of that as well. And within IT, PCI DSS implementation, ISO 27001 implementation, and so many other things as well. And so a lot of the work that you do goes very closely with working with employees to ensure that all of this, just all these systems are done, they're ready to be implemented. But we don't know the effectiveness of it, of course, until it is part of the organization's DNA. How much have you had to had a role to play when making employees' education a priority also? Because at the end of the day, if they do not understand or fulfill those responsibilities, the onus comes on you. Yeah, exactly. Very tough, by the way. It's very tough, to be very honest. No, as a saying goes, bad culture eats productivity as breakfast, right? So we need to work hard as far as the mindset of the people, the change of mindset of the people is concerned. It takes a lot of, of course, resources, money, time, energy, and so many things as well. Because शायद हमारे कल्चर में ओवरऑल इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जनरली नहीं होती है कि इस तरह की चेंज को एक्सेप्ट किया जाए. चेंज का पार्ट तो सब बन जाते हैं, बट उसकी एक्सेप्टेंस डाउन द लाइन, उसकी कंक्लूजन एंड देन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स of course always matter, right? तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एंड डिफरेंट कंसिस्टेंट परसिस्टेंट अवेयरनेस
क्योंकि गवर्नेंस जस्ट around the corner. I mean hardly 10 to 15 years है जो गवर्नेंस के एक वर्ड मार्केट में आया. आज भी हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इतना पुराना नहीं समझा जाता, क्वाइट रिसेंट टर्म बाय द वे. सो उसके लिए थोड़ा सा आई वुड से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. लोगों को इसके बारे में बताना होता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसकी चैलेंजेस, इसके फायदे, इसके इसके रिपरकशंस अगर नहीं हम इसको फॉलो करते हैं. और दूसरी चीज़ें बट ये कि पीपल समझ जाते हैं, और दूसरे भी फोरम्स होते हैं इस तरह से इसको लेके चलने में. डिफरेंट कमिटीज़ हैं, और SBP है, डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस है. तो टाइम लगता है, बट यस दे विल फॉलो इंशाल्लाह. So when we are talking about also developing these structures, but आवाज आपकी, sorry, can you hear me now? Yeah. I was thinking, for example, right now, if I were to ask you, okay, what is the current IT infrastructure in your organization lacking, or where is there a room for improvement? Because that would, of course, help you develop that IT field. The basic, as I said earlier, the governance means the balance between compliance, conformance, and performance, right? तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं, और अक्सर मैं उसको फॉलो करता हूँ, एंड आई गॉट सक्सीडेड ऑल द टाइम. पास्ट में ऐसा होता था कि आपको क्वेश्चन मिला, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यू गॉट 10 out of 10, और आई वुड से 9 out of 10, राइट? दैट इज परफॉर्मेंस. कंफॉर्मेंस या कंप्लायंस का बात है कि जो आपने क्वेश्चन या जो सॉल्यूशन लिखा वो कितना कंफॉर्म करता है इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस को, स्टैंडर्ड्स को, गाइडलाइंस को, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. दैट इज व्हाट कंफॉर्मेंस या कंप्लायंस. ठीक है. अब आज की जो गवर्नेंस है वो ये बात करती है, आज जो गवर्नेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. अगर आपने दोनों में बैलेंस रखा, सिर्फ काम की बेस पे आप 9 out of 10 नहीं दे सकते. एज गवर्नेंस सेज, आपको काम होना चाहिए विद द कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस या इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस. ये दोनों चीजें बैलेंस होंगी, then you can give them 10 out of 10 or maybe 9 out of 10, right? तो इसकी अवेयरनेस, इसकी इनकलकेशन लोगों की दिमाग में होना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक चीज. फिर इसके KPIs, इसको आप रिलेट करें उनकी परफॉर्मेंस से. सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे आप उनकी इंक्रीमेंट, उनकी प्रमोशन, उनकी दूसरी इंसेंटिव्स को नहीं बढ़ा सकते. आप परफॉर्मेंस एंड कंफॉर्मेंस दोनों मिला के उसको आप उनके इंसेंटिव में क्लब कर सकते हैं. तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है. अगर ये चीज हो जाती है बुनियादी तौर पे, तो लोग इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं, लोग सुनना शुरू हो जाते हैं. फिर देन अवेयरनेस आ जाती है, देन ट्रेनिंग आ जाती है, देन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, जो भी आपकी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है. और फिर लोग उसको क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन या टॉक, इस तरह जो है ना, वो चीज पे लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जा रहा हूँ. I was saying we also at the same time, जैसे आपने कहा, we also need to consider the organization's key objectives, right? This would include the investment you will need to put in, so उसके हिसाब से how are you designing, the right tools and policies for your organizations? Because when you think about what you need, what comes to your mind if I were to ask you when you think about achieving data security, moral support, and strong team? There are many facets to making your team work. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो स्टेट बैंक की रेगुलेशन, नंबर 1. नंबर 2, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस. हमें दो चीजों को फोकस करना होता है एट द स्टार्ट, राइट? जब भी हम किसी पॉलिसी को, प्रोसीजर को, गाइडलाइन को लिखना शुरू करते हैं, सही है, चाहे वो गवर्नेंस की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की. नंबर 1. नंबर 2, अलाइनमेंट. गवर्नेंस कहता है IT शुड बी अलाइंड विद द बिजनेस, राइट? बिजनेस के डिसीजंस IT से अलाइन होने चाहिए, IT के डिसीजन बिजनेस से अलाइन होने चाहिए. यानी मिसाल के तौर पे बिजनेस ने कहा कि अगले 5 साल में हमने 500 ब्रांचेस बनानी है. अब ब्रांचेस एस्टैब्लिश करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको डिवाइसेस चाहिए, आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको लोग चाहिए, और सो मेनी थिंग्स, राइट? अब अगर IT को नहीं पता तो अगले 5 साल में 500 ब्रांचेस कैसे एस्टैब्लिश होंगी? IT को ना सिर्फ पता हो बल्कि IT उससे अलाइन भी हो. अगर ये अलाइनमेंट हो जाती है, परफॉर्मेंस कंफॉर्मेंस के बैलेंस हो जाता है, लोगों को अवेयरनेस शुरू हो जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो जाती है, इंटरनेशनल रेगुलेशन की कंप्लायंस भी शुरू हो जाती है, होना शुरू होती है, तो आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. फिर विद इन द बैंक डिफरेंट कमिटीज होती हैं. बोर्ड की कमेटी, बोर्ड के मेंबर्स, फुल बोर्ड होती है, डिफरेंट कमिटीज, सब कमिटीज, मैनेजमेंट कमिटीज. ये भी वो चेक पॉइंट्स होते हैं, ये भी वो जैसे कहता हूँ, आई वुड से ये वो भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं जो इन सब चीजों को होने में मदद देते हैं, टाइमली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. आपने ऑफ कोर्स बात की that state bank या regulator of course has a strong role to play.
In organizations that are not right now thinking about cybersecurity because, of course, they don't have it by the regulator, what would you say should be the starting point to develop a strategy for this? Again, business, alignment with the business. अगर आप IT की बात कर रही हैं, within the IT अगर आप ये बात करें तो alignment with the business, that is most important. Funds होना और दूसरी चीज़ों ना बहुत बात की बात है. अगर aligned है तो फिर funds भी होने चाहिए and then so many things. आपके पास human resource भी होनी चाहिए और दूसरी में alignment है तो खुद ब खुद आपको उसके objective जो बैंक के objective हैं, जो board ने मैंने कहा ना जैसे ये board ने decide किया है कि अगले 5 साल में आपकी 500 branches होनी चाहिए. अब ये कैस्केड होगा बिजनेस में, ये कैस्केड होगा आईटी में, ये कैस्केड होगा दूसरे क्वार्टर्स में विद इन द बैंक. उसमें इन्फोसेक भी आ जाता है, उसमें गवर्नेंस भी आ जाती है, उसमें ऑडिट कंप्लायंस भी, उसमें रिस्क भी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी एंड सो मेनी थिंग्स एज वेल. तो बुनियादी तौर पे ये एंड देन डाउन द लाइन आपके अपने ऑब्जेक्टिव विद इन आईटी. आप अगले 5 साल में आईटी को कहाँ देखते हैं एज सीआईओ या एज हेड ऑफ द आईटी? ठीक है, उसके हिसाब से फिर हायरिंग, उसके हिसाब से फिर परचेजिंग, उसके हिसाब से फिर चीज़ों को एक्वायर करना, इंगेज करना, सॉफ्टवेयर परचेज करना, हार्डवेयर परचेज करना, उनको इंगेज करना. क्योंकि डिजिटल की आपने बात की तो मोबाइल ऐप का ज़माना है, मोबाइल बैंकिंग का ज़माना है, इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है. तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ पे हम ये सोचें कि हमें थोड़ा सा टाइम बहुत टफ है ना. बैंक्स 70-80 प्लस बैंक्स है पाकिस्तान में, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, माइक्रो फाइनेंस एंड अदर बैंक्स मिला के. तो हमें उनके साथ एब्रेस्ट रहना पड़ता है और एब्रेस्ट रहने के लिए हमारी डेवलपमेंट, हमारी ह्यूमन रिसोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, all got to be very strong. And if I were to ask you, especially because आपने ये बात की about multiple branches, multiple banks, multiple, of course, even teams working in and especially with this work from anywhere culture that also has seemed to taken off in Pakistan also. How are you in this sort of a structure? How are you balancing security with growth also? Because security, of course, itni aapko customers are not over. Sometimes they are accessing your banking services from even international terrains, right? So in that case, how does the framework constantly evolve or change? बहुत मुश्किल काम है ना इस चीज को बैलेंस रखना कि चीजें सिक्योर्ड भी हो और प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर ना हो. बहुत मुश्किल काम है क्योंकि चीजों को बंद करना आसान होता है. 10 एप्लीकेशन है, 10 की 10 को आप बंद कर दें, 10 की सिक्योरिटी टाइट कर दें, उसकी पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स कर दें, उसकी दूसरी जो भी एंड पॉइंट्स उसको आप क्लोज कर दें या टाइट कर दें. लेकिन उसको ओपन करने के लिए आपको बाकायदा ड्यू डिलिजेंस करनी होती है. तो स्टार्ट में प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस चाहता क्या है, ऐप से, डेटाबेस से, इंफॉर्मेशन से, डेटा से जो हमारे पास मौजूद है. क्योंकि आईटी कस्टोडियन है, आईटी के पास सारा डेटा मौजूद है बैंक का, राइट. अब आईटी को बिजनेस कहेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, राइट. इन्फोसेक बीच में शामिल होता है, इन्फोसेक इन सब चीज़ों को ड्यू डिलिजेंस कर रहा होता है. तो इसका बैलेंस होना कि इतनी सिक्योरिटी भी ना हो कि प्रोडक्टिविटी हैम्पर करे, प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, प्रोडक्टिविटी लैग करे, और इतना कम भी सिक्योरिटी ना हो कि सब कुछ अलाउ हो जाए, जो चाहे पीपल कैन गेट इन एंड can go out and then have some data or information out of the bank, and so that's very dangerous, by the way. It has to be balanced, by the way, ठीक है, as per the requirement of the business. And then technology comes into play. So many tools are there जो automate किए जाता है इन्फोसेक को कंप्लाई करने के लिए, इन्फोसेक को ऑटोमेट करने के लिए, ताकि चीजें 24/7 पीपल का एम्प्लॉय का होना जरूरी ना हो, खुद ब खुद चीजें फ्लैग ऑन हो जाए थ्रू SMS, थ्रू मोबाइल ऐप, लाइक डेटा सेंटर डाउन हो गया, या फॉर एग्जांपल आग लग गई, या कोई ब्रीच हो गई है, उसके लिए हमें इस तरह की ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है. And we've also seen that a lack of expertise also in certain organizations has hurt some in their cyber preparedness. Just say you talked about the readiness of the team also. I think that's something which will always be work in progress, because the way phishing attacks are evolving, I think so are organizations and their IT frameworks, right? What would you say as we head closer into the last quarter of this year and early 2023? What do you think the future cyber ecosystem will look like, especially because financial services, which has always, of course, been one of the most mature markets even in Pakistan? Where do you see this going in the next 1 year? असल में थोड़ा सा मैं इसको सिंपल क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस है 15 साल का पढ़ाने का. जो चीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ना, वही इनटेक मिलता है आपको इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है. अब इन्फोसेक पढ़ाया जाना शुरू हुआ यूनिवर्सिटीज के अंदर, MSc इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, BSc इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बट स्टिल गवर्नेंस नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है. जब तक गवर्नेंस को पढ़ाया नहीं जाएगा उस वक्त तक हमारे पास गवर्नेंस की रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे इंडस्ट्री को.
आज जितने चंद लोग गवर्नेंस के अंदर मौजूद हैं वो दे ऑल आर पैशनेट। ये वो लोग हैं जो खुद से गवर्नेंस में अपने आप को प्रोग्रेस करके पढ़ के खुद से पढ़ के इधर उधर ट्रेनिंग लेके आगे बढ़े उसके अंदर। जब तक गवर्नेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाएगी उस तक हम एक इकोसिस्टम को फोरकास्ट नहीं कर सकेंगे कि अगले 10 साल में हम कहाँ खड़े हैं उसके अंदर। इन्फोसेक अभी भी मैच्योर हो रही है, क्यों? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ाया जाने लगा है। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। तो जब मार्केट में यूनिवर्सिटीज के अंदर इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा एकेडमिक्स के अंदर, तो ज़्यादा उसके अगेंस्ट उसके हवाले से आपके पास कोर्स आउटलाइन भी होगा, उसके हवाले से आपके पास रेलेवेंट फैकल्टी भी होगी, रेलेवेंट टेक्नोलॉजी भी होगी, टूल्स भी होंगे, लैब भी होगी, प्रैक्टिकल भी होंगे, ऑफ कोर्स एग्जाम भी होगा, टेस्ट भी होगा। तो आज के दिन गवर्नेंस के हवाले से सिर्फ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं जो लोग खुद से तैयारी करके या ट्रेनिंग लेके वो कर लेते हैं। जैसे CGIT है, कोविड है, कोविड फाउंडेशन है, इम्प्लीमेंटर है, एंड देन असेसमेंट एज वेल। तो ये सब चीज़ें मिलके एक अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें परमानेंट फैकल्टी भी होगी, विजिटिंग फैकल्टी भी होगी, रेलेवेंट ट्रेनर्स भी होंगे, रेलेवेंट गेस्ट स्पीकर्स भी होंगे, कीनोट स्पीकर्स भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे उसके अंदर। देन क्योंकि इंडस्ट्री को तो चाहिए लोग, इंडस्ट्री तो वेट कर रही है इस तरह के ट्रेंड लोगों की, बट गवर्नेंस के लोगों का आज भी बहुत शॉर्टेज है मार्केट। I would think IT security conversation with the board is something which has been going around now, and because I know that part of your role also looks after that, communicating that with the board or with executives from the corporate governance lens. You did talk about how it has to make business sense. Unless business sense nahi ban raha, of course there is little to no investment that's going to come in. But what are some factors that have worked for you that others can take away from this? First of all, will. डायरेक्शन, विजन, मिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल, अगले 10 साल हम बट वो कहते हैं ना टू स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। आपने जब स्टार्ट लेना उस वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अपने अगले 5 साल में 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत कमा लिया आपने, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पिछले 70 साल में बैंकिंग की और दूसरी इंडस्ट्री की, राइट, सब कुछ हो गया। व्हेन कम्स कंप्लायंस, व्हेन कम्स कन्फॉर्मेंस, इट हैज टू बी देयर। I mean, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आप बहुत अच्छा घर बना लें, बहुत खूबसूरत घर बना लें, लेकिन वो सिक्योर्ड ना हो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। डेटा है, मौजूद है, सिस्टम है, बट अगर वो सिक्योर्ड नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स यू वुड बी शेकी। आज का कस्टमर, आज का क्लाइंट इतना स्मार्ट है, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। वो मूव करने में जस्ट अ सेकंड वो फैसला कर लेता है कि मैंने इस बैंक से दूसरे बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलना है, क्योंकि ये बैंक इनसिक्योर है, ये बैंक सिक्योर्ड है, तो मुझे यहाँ पे जाना है उसके अंदर, राइट। तो अगर टॉप ऑफ द लाइन यानी बोर्ड लेवल पे अगर आपकी विल होगी कि आपने गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने कस्टमर सेंट्रिक सिस्टम्स बनाने हैं, आपने उनको परफॉर्मेंस 100% देनी है, आपने उनको सिस्टम की अवेलेबिलिटी 100% देनी है, डाउन टाइम कम से कम होगा या बहुत ही लीस्ट होगा, तो अगर इस तरह की विल होगी तो डाउन द लाइन वो चीज़ खुद ब खुद कैस्केड होगी आईटी में, बिजनेस में और दूसरे वर्टिकल्स में जो विद इन द बैंक एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज द केस। So, lastly, of course, what would be some of the monitoring tools, especially because you talk a lot about, you have to constantly evaluate if this is working, this is not working, because of course it's not like a one-size-fits-all model. Selecting a team for IT governance isn't enough. You have to monitor to determine whether things are working well or not. Someone who can right the wrong. So how much of your role sort of overlaps with that in terms of monitoring also? If things are recorded, it can be only then it can be monitored, right? If things are not recorded, that means there is no point to monitor those things, right? Right now things are being recorded as far as banking industry is concerned. Everything is being recorded, right? Our data center, our different information, different data, usability of different softwares, hardwares, and different devices as well, right? So data is there. If data is there, it can easily be monitored. उस मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट मोबाइल ऐप्स हैं, हमारे अपने इन हाउस डेवलप्ड टूल्स हैं, परचेज किए हुए हैं, बेशुमार लॉन्ग लिस्ट है, आई मेंशन लेटर ऑन। एंड पास्ट में ये रिकॉर्डिंग ही नहीं होती थी, राइट, चाहे वो लॉजिकल सिक्योरिटी हो या फिजिकल सिक्योरिटी हो, लेकिन आज के दिन चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, चीज़ें मॉनिटर होती हैं। बैंक है, बैंक का एक प्रोडक्शन साइट है, एक उसका DR साइट है, एक शहर में प्रोडक्शन साइट है, दूसरे शहर में DR साइट है, उसकी अवेलेबिलिटी बीइंग मॉनिटर्ड, उसका जो भी मैनेजमेंट है, उसकी एनवायरनमेंट है, चाहे वो उसके अंदर का टेम्परेचर हो, उसके अंदर की हीट हो, या फॉर एग्जांपल जो आग लगने के जो हाथ हैं, जो आग लगने के रीजंस हैं, वो सब चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू मॉनिटर होती हैं। और
जब मॉनिटर होती हैं तो उसकी बेस पर डिसीजन, डेटा होगा तो डिसीजन होगा. It is called, by the way, data-driven governance. The data-driven governance means it has to be based on certain data, certain information. If there is no data, it cannot be monitored, it cannot be governed like that. So, data also shows us, of course, that how businesses have become more technology driven. And that's something, you talked a lot about data as the company's, most precious resource. Also the data, all of that which is coming in. This, I understand based on your insights today, that it has become one of the most critical sort of areas when it comes to security breaches also, where they occur due to, security policies and other reasons. I think that's one of the main reasons why security policies constantly need to be evolved and need to be reviewed in order to follow certain compliance standards. What about organizations, of course? We talked a little bit about organizations that are not like regulated formally. Any closing thoughts from your end on developing in this world where everything is available online, which leads us to many vulnerabilities in our own, I think, day-to-day lives, as well as like customers of all these services? By and large, हर बिजनेस एंटिटी के ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटर पाकिस्तान में, ठीक है. लाइक बैंकिंग के ऊपर स्टेट बैंक है, जिस तरह नेफ्रा है, पैमरा है, ओगरा है, और दूसरे पीटीए है. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 2, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एज आई सेड अर्लियर, बैड कल्चर ईट्स प्रोडक्टिविटी एज ब्रेकफास्ट. अगर कल्चर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता उस हवाले से. तो फोकस होना चाहिए रेगुलेटर का. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्चर है. आप बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं, आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेके आ जाएं, बेहतरीन लोगों को आप बाहर से इंपोर्ट करके हायर कर लें, आप बेहतरीन चेयर टेबल और दूसरी चीजें परचेज कर लें, अगर इदारे का कल्चर नहीं है तो आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल सकते. नेवर आई कैन चैलेंज. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. फिर चीजें आती हैं कि आपका फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके KPIs क्या है, आपका विजन क्या है, मिशन की, ये सब चीजें. कल्चर का होना बहुत जरूरी है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ बातें ही करते हैं. कितने इदारे हमारे यहाँ जहाँ पे चीफ कल्चर ऑफिसर मौजूद है, आप काउंट कर सकती हैं अपनी फिंगर्स पे. जब तक इदारे के अंदर, मैंने बता दिया, आपने नोट कर लिया, आपने सुन लिया, आपकी ऑडियंस भी सुन लेगी, राइट. लेकिन जब तक इदारे के अंदर चीफ कल्चर ऑफिसर नहीं होगा, आई डोंट नो किसका पार्ट होगा, HR का होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं पता. जब तक कोई बंदा इस चीज का अकाउंटेबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उस वक्त तक ये चीज नर्चर नहीं हो सकती. ये चीज होगी तो फिर डाउन द लाइन उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू होंगे. हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने से प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, लोगों के लाने से प्रोडक्टिविटी नहीं आती है. प्रोसेस डिजाइन लेवल पर जब तक आप चीजों को हिट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप रिजल्ट्स को कैस्केड नहीं कर सकते डाउन द लाइन. दैट इज माय क्लोजिंग remarks. Thank you very much. And I think that makes so much sense, because at the end of the day, whether we are part of that organization or whether we are customers of that organization, that's what we look at. We look at the design. We want to, and now I think COVID ke baad se aur zyada, people want to work with people they are familiar with, they know, Exactly. take a connection. Exactly. With all this technology, I think people are actually going to human connections more than ever, and I think that always stays like validated forever. So I think uska to there's no replacement for it. So Exactly. That's our side for this session today, and we hope that these insights can bring or help you map out IT governance best practices and bring more benefits to you. It's as we conclude, I'd just like to highlight one thing which stood out for me was that, of course, you can have the best processes, the best paperwork, all of it done, but as Kashif Saab rightly said, if you don't have the right team and the culture within that organization to drive or implement those strategies or those plans, they're only as good as a brand new paper. So that's it from our side. We hope to see you again on another session, and thank you once again, Kashif Saab, for being present, and our partner COMMTEL for bringing this session to your screens. Thank you so nice. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.